ठीक है. So we'll first start with management administration. We'll finish it. We may have time today for another chapter. In that case, we will start with accounts. अगर time रहेगा तो accounts of companies से start करेंगे. Tomorrow then we'll see what to do. And at the end of the lecture, we'll do the MTP, RTP and the past exam questions for the chapters which are already done. Okay. Now, management and administration, as we all know, is a very, very important chapter, and it will be for around 20 to 25 marks in your examination. So a lot of questions will be asked from this particular chapter. The chapter is very, very procedural, so there are a lot of things that you have to remember. ऑप्शन नहीं है, वो याद रख के ही जाना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चंस उसके ऊपर से आएंगे. लॉट ऑफ केस स्टडीज आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड नो वे कैन वी स्किप दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है. नाउ द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स एंड वेयर इज द पेंसिल? यस. वील फर्स्ट स्टार्ट विथ रजिस्टर्स, एनुअल रिटर्न्स, देन मीटिंग्स का पार्ट आएगा जो अपन बाद में करेंगे. सो वील डू रजिस्टर्स. Then prerequisites of a meeting. Prerequisites of meeting को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है. लाइक नोटिस ऑफ द मीटिंग इज टू बी सेंड, जो पहले बिफोर द मीटिंग, देन ड्यूरिंग द मीटिंग यू हैव टू इंश्योर कोरम, चेयरमैन, प्रॉक्सी, ऑल ऑफ दैट, एंड देन आफ्टर द मीटिंग मिनट्स जो मेंटेन करने का उसके अंदर डिवाइड होगा. एंड देन यू हैव रेजोल्यूशंस का पार्ट विच इज okay, not very frequently asked. Meetings is something already done. I don't know why it's coming again. So that is how the entire chapter will flow. We'll first start with registers. Register. What is a register? अलग अलग टाइप के रजिस्टर मेंटेन होते हैं. फॉर एवरी काइंड ऑफ शेयर कैपिटल दैट वी होल्ड, वी विल हैव अ रजिस्टर दैट इज टू बी मेंटेन, वेदर इट्स इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स होता है. तो हर एक के लिए वील हैव अ रजिस्टर दैट वी आर गोइंग टू मेंटेन. द रजिस्टर विल गिव द डिटेल्स ऑफ what who are the shareholders of the company, what is the amount of shares that they are holding in the company, and what is their details like address, PAN, all of those details. If there's a transfer, there's a transmission, all of those pledge, hypothecation, mortgage, all of those details will be maintained in the register of the company. So the register is something which will give details about the company. About the shareholders of the company. For every type of share, there is a different register that is to be maintained. Now, normally we know that the documents are to be maintained for a period of 8 years, and then after that it can be discarded. But again, register is something that you will have to maintain for a longer period of time till those shares are there. If the preference shares, say for example, are redeemed and 8 years have also lapsed, then you can do away with the register. But otherwise, you will have to maintain them for a period of till the time the dissolution of the company happens. Like you have your documents, what do you call that? Incorporation documents, correct? MOA, everything that you filed at the time of incorporation is something that you will maintain till dissolution. वैसे ही इसको भी maintain करना है. ठीक है? Then whenever there is a change, then that change has to be incorporated in the register within a period of 7 days from the date of approval by the allotment, by the board or committee. अगर allotment होता है तो वो भी होगा. कहाँ पे register रखेंगे? तो registered office of the company पे रखेंगे, या any other place where the 1/10 of the members holding the voting power reside, वहाँ पे अपन रख सकते हैं. Again important from MCQ perspective also. And index of the names required to be maintained. Agar members are less than 50, index is not mandatory, but once it crosses 50, you will have to keep an index. Okay. And now, because everything is in demat form under the Depository Act, the depository will maintain a record of the register of members. Now coming to the foreign register. So this was under 88. ये वाला कौन सा था? यहाँ के जो sections है, if you can remember, try and remembering those sections because you know that this chapter is going to be asked. बहुत सारे questions आने वाले. तो अगर मुझे पता है annual return 92 है, ये 88 है, so I'll try and remember those sections. नहीं याद रहता है तो no force, but अगर आता है तो लिखो because question तो आने वाला है, तो थोड़ा show off हो जाएगा और ऐसे लगेगा section number भी आता है, correct?
Now, so that is pertaining to Indian registers. Now coming to foreign registers. What are foreign registers? So if I have shareholders in India, but I also have shareholders outside of India, or I have a place of business outside India, then I will maintain my my register over there, which will be called as a foreign register. So every entry that's there in the foreign register will have a corresponding entry in my Indian register. So I'll keep a entry there and same entry मैं यहाँ पे भी मारूंगी, so it will be there, and this register will give details about the shareholders who are abroad, who are holding shares outside of India. Again the same details which are required, अगर transfer, transmission, death, hypothecation, pledge ऐसा कुछ भी होता है, so that will also be recorded in the foreign register. But once it comes to the foreign register, a corresponding entry is also required to be made in the Indian register. तो Indian register में उसकी हर एक एंट्री होनी चाहिए. अगर foreign register I am closing, तो सारा information first I'll transfer to Indian register and then I can close the foreign register. If I want to open more foreign registers, then I have to again ensure that corresponding entries are passed in the Indian register. देखेंगे इसी चालू हुआ कि नहीं. ओके, जो भी रजिस्टर मेंटेन होता है, just one second, जो भी रजिस्टर मेंटेन होता है, ऑफ कोर्स आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है. सो अकॉर्डिंगली व्हेन यू आर मेंटेनिंग अ फॉरेन रजिस्टर हैज टू बी intimated, the details about the foreign register has to be given to the ROC. Any changes in the foreign register also has to be intimated to the ROC within a period of 30 days. So there is no, okay, one second please. Okay, so that has to be intimated to ROC within a period of 30 days. Any change also has to be maintained there. It's considered to be a part of the principal register. तो जो register India के अंदर है will be my principal register. Foreign register is outside of India. Now, every time entry is made within 15 days of making the entry, it will be transferred to the Indian register. Yeah, the shares number will be different in the principal register and the Indian register. एक point मैं बोलना भूल गई. If you're closing the foreign register, you need to give advertisement in 2 newspapers. We already know that 2 newspapers जब भी बोलेगा तभी 1 vernacular and 1 ये English newspaper में देने का है. And when you're passing the entries, they have to be authorized. यहाँ पे है, they have to be authenticated by the company secretary or other person authorized by the board. उसके बाद ही एंट्री होगा. जैसे यहाँ पे वो सेम प्रोविजन है, within 7 days you have to get it approved by board or committee. यहाँ पे same provision even for foreign register. खाली ये एक थोड़ा अलग है closing का. ये register within 15 days of entry is made and 30 days में ROC के पास करना है. तो ये 3-4 पॉइंट्स है जो थोड़े डिफरेंट है, बाकी इट्स वेरी वेरी सिमिलर. सो दिस इज अबाउट योर रजिस्टर इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया होगा तो रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन होगा. वॉट एवर एंट्रीज आई एम पासिंग विद इन 7 days I will pass it here. All the details about the shareholder including name, address, PAN, occupation, number of shares held, the price at which the shares are got, transfer, transmission, hypothecation, pledge, all of those details I will have to mention in my Indian register. Index is to be maintained if more than 50 members. If less than 50 members, then index is not required to be maintained, and it can be kept at the registered office or any place where 1/10 of the members reside. ठीक है. फॉरेन रजिस्टर में, फॉरेन रजिस्टर इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन रजिस्टर. एवरी एंट्री इन द फॉरेन रजिस्टर हैज टू हैव अ करस्पॉन्डिंग एंट्री इन द
प्रिंसिपल रजिस्टर कितने दिन के अंदर होना चाहिए, तो 15 डेज के अंदर ये एंट्री पास होना चाहिए. एनी चेंजेस, सो दिस फॉरेन रजिस्टर आई विल फाइल विद द आरओसी विद इन 30 days. एनी चेंजेस इन द फॉरेन रजिस्टर अगेन आई विल फाइल इट विद द आरओसी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days. And if there is a closing of the foreign register, then all the entries have to be first put into the principal register, then I can close it. Also before closing, I'll have to give a notice to the members by way of ad in 2 newspapers, and then I can close my foreign register. Every entry is authenticated by the board or person authorized on their behalf for the purpose of passing the entries. Any non-compliance will attract penalty. ठीक है. Now coming to beneficial interest. अगर मुझे beneficial interest है, what is beneficial interest? Beneficial interest is, say for example, I am holding shares on behalf of a minor. So on behalf of my son, if I am holding shares, then I am not the owner of the shares. Who is the owner of the shares? He is the owner of the shares. But on his behalf, I am holding shares. So I am the beneficial owner. The son is the beneficial owner. I am just holding shares on his behalf, and then I have to say it to the company, I have to declare it to the company that, boss, I am not holding shares in my capacity, even though it's in my name. It is for the beneficial interest of someone else. ट्रस्टी जो होता है उसका भी यही काम होता है, गार्डियन फॉर अ माइनर अगेन सेम काम होता है उसका. तो यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर इज समवन एल्स, एंड दैट बेनिफिशियल इंटरेस्ट दैट दैट पर्सन हैज इन द कंपनी हैज टू बी डिक्लेयर्ड टू द कंपनी सेइंग दैट, बॉस, आई एम होल्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, एंड दैट विल बी टेकन इनटू रिकॉर्ड बाय द कंपनी. सो एनी मेंबर, if I am not holding, I have to give a declaration that I am not holding. So it's a form. It will ask you, are you beneficial owner? Yes. Give details. No, then nothing. So यहाँ पे, if I am not a beneficial interest holder, I'll have to inform. अगर है beneficial तो बताना है, अगर कोई changes है तो भी बताना है, and all this declaration to be filed within 30 days and company to ROC in 30 days. So individual to company, company to ROC, दोनों भी 30-30 है. Sorry. ठीक है. And this rule is not applicable to mutual fund, venture capital funds or other funds approved by SEBI, because SEBI में अगर तुम mutual fund hold कर रहे तो there's a fund which is holding on your behalf, so there's always beneficial ownership. तो इसके लिए ये लोग को ये apply नहीं होता है. Okay. Then coming to significant beneficial owners. Significant beneficial owners कौन है? तो significant beneficial owners वो होते हैं जो together or with someone else are holding. इसमें दो है. Act बोलता है 25% or more of the shares or the voting power, but the rule says 10% or more of the shares, voting power or the distributable profits. So यहाँ पे Act के हिसाब से 25% है, rules के हिसाब से 10. So अपने को 10 देखना है. 10 के ऊपर अगर है तो SBO हो जाता है. 10% of shares, 10% of voting rights, 10% of total distributable dividend, and has a right to exercise or actually exercise significant influence or control. इसके लिए I had given a chart in your book when we were in the classroom. So refer to that chart. If possible, just someone send me a picture and I'll also put it up on the group. So SBO के लिए what are the things? हाँ, 10% या more of voting power या shares होता है तो then I'll be a SBO, that is a significant beneficial owner. If I am the SBO, I will have to intimate to the company within 30 days of becoming the SBO saying that I am the SBO, and the company will file the necessary requirements with ROC. But sometimes I am not declaring myself to be the SBO when I am actually the SBO, and the company has a suspicion that I am a SBO. So company will send me a notice asking whether I am SBO and to give all the details, and then in that case I have to give all the details to the company and the company will file it with ROC. But अगर मेरे को notice आया for giving the details and I don't give the details, then in that case the company will apply to the tribunal. They will go to the tribunal, tell the tribunal कि इसके पास से information मांगा लेकिन information दे नहीं रही है या seems incorrect information दे रही है, ऐसा कुछ. फिर tribunal दोनों का opportunity of being heard देगा and then they will pass an order. Okay. Significant influence पढ़ा. Onus of declaring the SBO is on the reporting company. तो वो company का responsibility है and hence the company is required to send notice when they have a suspicion. Tribunal का अपने को पता है.
ट्रिब्यूनल को अप्लाई करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। ये डिक्लेरेशन बाय एसबीओ, अगर खुद से डिक्लेरेशन करना है। नॉन एप्लीकेबिलिटी, जो फंड्स होते हैं या गवर्नमेंट है उनको ये नॉट एप्लीकेबल है। हेल्ड बाय इन्वेस्टर, एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये लोग सबको सेबी के अंडर ऑलरेडी गवर्नड है, तो वहां पे एसबी होता है, तो ऑलरेडी डिक्लेयर करना है। अगर कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन होगा तो वो पनिशेबल है बाय एसबीओ को भी पनिशमेंट लगता है एंड द रिपोर्टिंग कंपनी को भी पनिशमेंट लगता है। सो दिस इज अबाउट योर एसबीओ एंड बेनिफिशियल इंटरेस्ट। एनी डाउट्स टिल नाउ? एनीथिंग दैट यू वांट मी टू रिपीट? Okay. Now, coming to the last part of registers is about closure of the register. अगर मुझे register close करना है for the purpose of maintenance, see that register is something which is a matter of public knowledge. It is available to anyone who wants to see the register. एक बार तुमने demand किया, then if I am a company, within 7 days I have to give you the register for your approval. For your inspection. So that is my duty as a company. लेकिन कभी कभी रजिस्टर में मुझे इश्यूज होते हैं या कुछ, so I have to do maintenance work on the register and for that I will close my register. अगर मुझे register close करना है then I'll have to give a notice saying that I'm going to close the register at a period, like once at a time I can close it for a total of 30 days. उससे ज्यादा मैं नहीं close कर सकती. So 1 month that register will not be available for inspection. Maximum of 45 days in a year. तो पूरे साल में सब मिला के 45 डेज में कर सकती हूँ. तो कभी 5 दिन किया, कभी 2 दिन किया, कभी 7 दिन किया, बट टोटल period during the year cannot exceed 45 days at a time. Maximum 30 days के लिए I can close. Very very important from an exam perspective. 7 days का notice देना है before closure and period not exceeding 30 days at one time. Aggregate period of 45 days in a year. MCQ में भी आ सकता है. ठीक है? Are we all okay with this? Any queries? Any doubts? No doubts. Now थोड़ा पहले नीचे जाएंगे टूवर्ड्स मीटिंग्स, फिर अपन एनुअल रिटर्न पे जाएंगे. मीटिंग्स अपना 2 टाइप का मीटिंग्स होता है. वन इज योर एनुअल जनरल मीटिंग एंड सेकंड इज योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग, जब भी मैंने बोला मीटिंग अलग अलग टाइप का होता है. बोर्ड मीटिंग होता है जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलते हैं. क्रेडिटर्स का मीटिंग होता है जहाँ पे क्रेडिटर्स मिलते हैं. जब मैं जनरल मीटिंग बोलती हूँ तो इट इज ऑलवेज अ मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी को हमेशा नहीं बुलाते फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग, बट whenever they come it's called as the general meeting. एनुअल जनरल मीटिंग मतलब एनुअली होता है, साल में एक बार होता है. is the most important meeting of the company and the company has to hold that annual general meeting. कहीं पे भी हम देखेंगे कि this clause is not applicable to private company, this clause is not applicable to section 8, OPC, whatever. It will always be mentioned provided that they have filed their financial statements, annual return. तो annual return के लिए annual general meeting चाहिए. Once it is approved at the AGM, only then you can file it. So AGM is a very very important meeting held annually. So अगर मुझे शेयर होल्डर्स को साल में एक बार मिलना है तो एनुअल जनरल मीटिंग बुलाएंगे. उसमें फिनेंशियल्स डिस्कस होगा, डिविडेंड डिक्लेयर करना है वो डिक्लेयर होगा. All of that will be discussed. But if I have to meet the shareholders in the middle of the year, say for example I want to raise funds, IPO करना है, प्रोस्पेक्टस इशू करना है, तो मैं वेट करूंगी नहीं सितंबर आएगा तब जाके बताऊंगी, तब जाके पूछूंगी, नहीं, वैसा नहीं होगा. सो इफ आई वांट टू मीट देम इन द मिडल ऑफ द ईयर, समटाइम बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग और आफ्टर, व्हाटएवर, देन इन दैट केस व्हाट आई विल डू is I will call for a extraordinary general meeting. तो यहाँ पे वो लोग middle of the year उनको बुलाऊंगी कि चलो मुझे ये डिस्कस करना है and that is why we are meeting.
सो एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनुअल जनरल मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग कभी होल्ड करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ व्हाट इज इट सेइंग? दैट इफ इट इज फर्स्ट AGM एंड इफ इट इज सब्सिक्वेंट AGM, ऐसा सब्सिक्वेंट नहीं लिखा है बट ठीक है, सब्सिक्वेंट AGM है, यहाँ पे समझ जाओ. तो फर्स्ट AGM मेरा होगा विद इन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, कैन नॉट ग्रांट एनी एक्सटेंशन. सो इफ आई एम इनकॉर्पोरेटेड टुडे एंड 31 मार्च को ईयर होता है खत्म, देन 31 दिसंबर के पहले मेरा फर्स्ट AGM आई हैव टू होल्ड, बिकॉज न्यू कंपनी तो बोला चल नया नया है तो मैं तेरे को 3 महीने का लीवे देता हूँ, तो तू 3 months के अंदर और एक्स्ट्रा तेरे को देता हूँ, तू कर ले होल्ड. बट फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद सेकेंड ईयर फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, इफ आई एम इनकॉर्पोरेटेड ऑन 29th March ऑल्सो, अगेन फॉर सेम डेट ऑफ 31st December विल बी एप्लीकेबल फॉर मी. ठीक है, नाउ इफ आई एम for my subsequent AGM, the time it has to be held within 6 months from the end of financial year, that is your 30th of September, and the time gap between the first AGM and the second AGM or the subsequent AGM, any like previous year ka AGM and this year ka AGM, cannot exceed 15 months. So dono conditions I have to fulfill and then I have to hold my AGM. Okay, so 6 months from date of closing, time gap cannot exceed 15 months, and in this मुझे 3 months का extension ये रहा मिलेगा for special reasons. तो स्पेशल रीजन मेरे को कन्विंस करना पड़ेगा आरओसी को कि क्यों, ऐसा फालतू रीजन में देगी तो मेरे को नहीं मिलेगा, बट स्पेशल रीजंस के लिए मिलेगा. यहाँ पे वो 3 months मुझे नहीं मिलेगा बिकॉज वो ऑलरेडी पहले से वो लोग ने मुझे दे के रखा है. ठीक है, सो फर्स्ट मीटिंग 9 months from end of financial year, no extension provided. Subsequent meeting 6 months from the end of financial year, or the time gap between 2 AGMs cannot exceed 15 months. 3 months extension provided for special reasons. ठीक है, so इसके केस स्टडीज है यहाँ पे. We will also do. नोटिस में जब भी स्पेसिफाई करते हैं तो बोलना है कि ये AGM है, बिकॉज AGM इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल द मेंबर्स वुड लाइक टू अटेंड द AGM. जो AGM होल्ड करता है बिजनेस आवर्स, बिजनेस डे, वर्किंग प्लेस पे होना चाहिए, उनको 21 days का क्लियर नोटिस देना चाहिए जो अपन पढ़ेंगे. सो ऑल ऑफ दैट रिक्वायरमेंट्स हैव टू बी कंप्लाइड विथ. एंड अगर मेरे को AGM होल्ड करना है एंड आई हैव नॉट हेल्ड द AGM, then the tribunal can also hold the AGM for the company, because as I said AGM is the most important meeting of the company. So you cannot say कि मुझे AGM नहीं करना है, then tribunal will hold the AGM on your behalf, and अगर वो किया तो of course penalty भी लगेगा to the company and the directors. And once the AGM has been held, then the report has to be submitted with the ROC saying that what has been discussed, who were the members present, all the details about the AGM will be given to ROC within a period of 30 days from the conclusion of AGM. सॉरी, उसमें सारा डिटेल्स अपन देंगे अबाउट द AGM. फेलियर टू डू सो विल अट्रैक्ट अ पेनल्टी. ठीक है, सो दिस इज अबाउट AGM. फर्स्ट AGM 9 months फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, subsequent AGM 6 months from end of financial year. First AGM 3 months extension नहीं मिलता है, subsequent AGM 3 months extension मिलता है for special reason. Subsequent AGM और उसके पहले के जो भी AGMs है, between 2 AGMs there cannot be a gap of more than 15 months. Okay, very very important, please remember. Now coming to extraordinary general meeting. अगर extraordinary general meeting मैं खुद से बुलाती हूँ तो no problem. Why? Because खुद ही बुला रही हूँ. I am saying I want to issue a prospectus and hence I am calling for a meeting. Again 21 days notice दूंगी, लोग आएंगे and the meeting will be held. लेकिन sometimes what happens is that the members decide that they want to call for a general meeting, that is a meeting of the shareholders. In that case they will send a requisition saying that we are requesting the company to hold the meeting of the shareholders, and that's called as a meeting by requisition. अगर वो requisition करना है
तो 1/10 of the members holding the paid up capital or 1/10 of the members holding the total voting power of the company will call for a general meeting, and that EGM, they will request the company that we want to call for a EGM. Once they have requested the company will send the notice to all the shareholders, because all the data is with the company, they don't have the data. So the company will arrange for the venue कहाँ पे meeting होगा and सबको notice भेजेगा, and then the EGM will be held by the shareholders at that particular meeting. अगर वो नहीं करता है, then the members will themselves take the data from the company and send the notices and hold the EGM. But in that case, जो भी खर्चा होता है in holding the EGM, the company will have to reimburse it to the shareholders. ठीक है, इसमें 2-3 चीजें, अगर जब कंपनी को बोलता है 21 days from receipt of requisition, not later than 45 days, they will have to hold the meeting. अगर नहीं किया तो 3 months के अंदर from date of requisition the members can hold the meeting. ये एक पॉइंट अपना रह गया था, बाकी एवरीथिंग इज कवर्ड हियर, द प्रोसेस इज हियर जो अपन ने डिस्कस किया वो. ठीक है, सो दिस इज अबाउट एजीएम एंड ईजीएम. ईजीएम का रिक्विजिशन का थियोरी क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है. 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल और वोटिंग पावर वाले लोग ईजीएम बुला सकते हैं, इसको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू एनुअल रिटर्न. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ पूछेगा इसके ऊपर. What are the things that will form part of your annual return? Very typical theory question इसके ऊपर पूछता है. And on this point of when the annual return has to be filed, especially this AGM should have been held, इसके ऊपर केस स्टडीज पूछा है. ठीक है, एक ही पॉइंट के ऊपर पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, एनुअल रिटर्न के बारे में क्या क्या है, तो वो बोलता है कि जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू मेंशन हियर. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस 10 डब्बास एंड वो लिख के आने का. सो registered office, principal business activities, holding subsidiary associate company, shares debentures का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो, क्या क्या लोन लिया है members and debenture holders along with changes for the previous financial year. So it's basically a form जो भरना होता है जिसमें सब लिखा रहता है. तो मेरे member shareholders ये साल कितने हैं, previous year कितने थे, what are the changes that has to be intimated. Promoters, directors, key managerial personnel and changes as compared to previous year. फिर इनको कितना remuneration जाता है वो भी अपने को inform करना है. Then meetings of the boards and its various committees along with attendance details. Penalty or punishment imposed on directors, officers or any other person and compounding of offences if it has happened. Any certification of compliance disclosure, अगर कोई compliance disclosure करना था उसके लिए कोई certificate देना था, whether that certificate has to be has been given or not. When it is given, attach the certificate. And last is details of shares held by foreign institutional investors, including their name, address, country of incorporation, registration and percentage of shareholding. So क्या क्या आपने mention किया है, तो where the registered office is, principal place of business क्या है, मेरा क्या शेयर होल्डिंग है, डिबेंचर्स कितना, प्रेफरेंस शेयर्स कितना, इक्विटी शेयर होल्डर, एंड व्हाट इज द चेंजेस देयरइन, क्या क्या शेयर कैपिटल में चेंजेस हुआ है, लोन मैंने कितना लिया है, मेरे शेयर होल्डर्स कौन है, पहले क्या थे लास्ट ईयर, ये साल क्या है, what has changed, who are my directors, key managerial person, how they have changed in the years, previous year compared to this year compared to previous year. Then what is the remuneration I give them, how has that changed. अगर कोई certification है for compliance disclosure, whether I have done, what is the certification that I have given.
Then what are the different kinds of meeting held, what was discussed at the meeting and who have attended the meeting. कोई penalty punishment लगा है तो what are the details about that penalty punishment. And the last is my foreign institutional investors अगर है तो उनका name, address, कहाँ पे रहते, occupation, all of these details will be mentioned in my annual return. So this is something which is very important to remember when you go for your examination because theory question आ सकता है. Now this annual return again annual है तो ये annual general meeting में financials के साथ discuss होता है and then that annual return has to be filed with ROC. So it is very important. तो वो कितने दिन में फाइल करना है? Within 60 days of AGM I have to file the annual return with ROC. तो मेरा compliance हो गया. सपोज मेरा एजीएम मैंने नहीं होल्ड किया, सपोज मेरा एजीएम मुझे रखना था लेकिन फॉर वांट ऑफ कोरम नहीं होल्ड हो पाया, फॉर वट एवर रीजन आई हैव नॉट हेल्ड द एजीएम, देन इन दैट केस ऐसा कि चलो नहीं होल्ड, एजीएम ही नहीं होल्ड किया तो कैसे एनुअल रिटर्न फाइल करेगा? नहीं, अगर मैंने एजीएम नहीं हेल्ड, आई एम नॉट हेल्ड माई एजीएम, देन इन दैट केस आई हैव टू फाइल द रिटर्न विद इन 60 days फ्रॉम द डेट द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड. Now the question is, वो should have been held, where will I get that date? तो I have to go back to my AGM का clause and वहाँ पे उसने क्या बोला है that I'm assuming it is a subsequent AGM. तो 6 months from end of financial year, time gap between two AGM not to exceed 15 months. So I will get my date on which I have to hold the AGM. अगर कुछ नहीं बोला है तो 30th September ले लेने का. And from 30th September 60 days. So 60 days from date of AGM should have been held. If AGM is not held, तो वो दिन पे annual return होगा. अगर AGM hold किया है, then 60 days from AGM my annual return will be filed. एनुअल रिटर्न जो है डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, ओपीसी रहेगा उसमें सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी, अगर नहीं है तो सिर्फ डायरेक्टर सेल्फ साइन कर सकता है. अगर टर्नओवर मोर देन 50 crores है तो सीएस इन प्रैक्टिस हैज टू सर्टिफाई, दोनों अलग अलग सीएस होने चाहिए. सो सीएस साइनिंग एनुअल रिटर्न एंड सर्टिफाइंग हैज टू बी डिफरेंट, प्रिजर्व फॉर 8 years, और अगर पेनल्टी लगेगा अगर डिफॉल्ट किया तो. Any questions here? Everyone has understood annual return properly? मैं थोड़ा नीचे दिख रही हूँ बट ठीक है, मैं खड़ी होंगी अभी थोड़ी देर में. Now place of keeping register, again something we have already done. Registered office या 1/10 of the total number of members reside. Okay, now coming to prerequisites of a meeting. Prerequisites of a meeting में एक है, अपन ने डिस्कस किया था बिफोर द मीटिंग, देन ड्यूरिंग द मीटिंग एंड आफ्टर द मीटिंग, पोस्ट द मीटिंग. सो बिफोर द मीटिंग मुझे क्या करना है? नोटिस भेजना है. नोटिस के साथ आई मे नीड एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट. देन ड्यूरिंग द मीटिंग आई विल सी कोरम है कि नहीं, मतलब जितने लोग होने चाहिए. देयर इज अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव टू बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू हैव अ वैलिड मीटिंग. सो फर्स्ट थिंग आई विल चेक इज क्या वो लोग प्रेजेंट है या नहीं है. Who will be the chairman of the meeting? Chairman of the meeting is very important because he is the person who will ensure that the meeting is going in flow, minutes file करेगा and all of that. Then proxy, अगर मैं नहीं आ सकती, जैसे कॉलेज में proxy देते हैं, यहाँ पे भी proxy दे सकते हैं, but rules and regulations है, proxy कभी अपॉइंट करना है वो important है. proxy का register maintain करना again important है. मैं कितने लोगों का proxy बन सकती हूँ again important है. देन वोटिंग, कैसे मैं अलग अलग टाइप का वोटिंग करूंगी, तो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, पोल, ऐसे अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, व्हाट आर द डिफरेंट वेज आई विल हैव द वोटिंग, एंड देन आई विल पास द रेजोल्यूशन. व्हाट हैज टू बी डन विद द रेजोल्यूशन पास, when it has to be filed with ROC, how it has to be circulated between the amongst the members of the company, all of that is something which I will study here. And the last is the minutes of the meeting. तो जो भी minutes जो भी मीटिंग में डिस्कस हुआ है, all those minutes will have to be filed with the ROC, but who will do all of that काम and who will do all that मजदूरी का काम? The chairman will do the work. ठीक है. सो मीटिंग अपने को पता है कौन सा अलग अलग टाइप का मीटिंग है. नोटिस ऑफ मीटिंग, खाली एक पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा है, ओनली ऑन दिस वन पर्टिकुलर पॉइंट. सो व्हाट इज इट सेइंग? दैट for a general meeting to be held, when I am holding a general meeting, that is a meeting of the shareholders,
then in that case I am required to file a 21 days clear notice. तो 21 क्लियर डेज नोटिस का देना है, मतलब कि ऐसे फोन करके नहीं बुला सकते कि चलो मीटिंग है आ जाओ, करेक्ट. 21 क्लियर डेज नोटिस देना है. नाउ क्लियर डेज नोटिस लिखा है म्हणजे काय, म्हणजे दैट द डेट ऑफ सेंडिंग द नोटिस एंड द डेट ऑफ द मीटिंग आर टू बी एक्सक्लूडेड, एंड जो बीच के दिन है वो एग्जैक्ट 21 होने चाहिए. 21 से ज्यादा हो सकता है, 21 से कम नहीं हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल एज 21 क्लियर डेज नोटिस. अगर मेरा आर्टिकल्स बोलता है जनरल मीटिंग के लिए 5 दिन का नोटिस देना है, तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज द एक्ट विल ओवरराइड द आर्टिकल्स, करेक्ट. सो आर्टिकल्स कैन नॉट रिड्यूस द पीरियड बाय 21 डेज. दे कैन इंक्रीज द पीरियड इफ दे वांट टू, बट रिड्यूस 21 डेज से कम नहीं हो सकता है. I can send notice by text, email, post, registered post, courier, जैसे भी भेजना है. वेबसाइट पे मैं डिटेल्स डाल सकती हूँ, but I have to give that notice. When I am sending the notice, I have to send it to the members, the legal representatives of the deceased member, अगर कोई मर गया है तो, assignee of the insolvent member, ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. तो मैं सबको ही नोटिस दूंगी दैट यू नो द जनरल मीटिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड. अगर मैं पोस्ट से नोटिस भेजती हूँ तो 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम आई एम सेंडिंग द डिस्पैचिंग द नोटिस, इट विल बी अज्यूम दैट द नोटिस हैज बीन सर्व्ड, करेक्ट. अपन ने जब भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तब मैंने बोला था जनरल मीटिंग होगा तो 48 आवर्स, एनी अदर मीटिंग देन ऑर्डिनरी पोस्ट का जो टाइम फ्रेम है वो, करेक्ट. Does everyone remember that? यहाँ पे भी शायद दिया है. Yeah. Sent by post, deemed to be served on expiration of 48 hours. Okay, इसके ऊपर केस स्टडी भी पूछ सकते हैं. Now, omission to send notice must not be deliberate, onus to prove on the company. Now 21 days clear notice चाहिए, लेकिन sometimes you can send a notice which is less than 21 days, and that is also okay provided 95% of the members who are holding the voting power or the share capital of the company, they approve that okay, this notice can be shared at a shorter time frame. If they agree, then you can have it at a shorter time frame of less than 21 days, otherwise 21 days is the minimum time frame. It should state the day, date, hour of the meeting, place, statement of business, and must be authorized by the board of directors. ठीक है? So this is about notice. Now, when we did your prospectus, when we did deposits, dividend, हर जगह पे डिविडेंड में नहीं था, प्रोस्पेक्टस था, डिपॉजिट्स में था, कि प्राइवेट प्लेसमेंट में था. तो जहां पे भी मैं नोटिस भेजती हूँ, इट इज सेइंग दैट स्पेशल रेजोल्यूशन इज टू बी पास, इट हैज टू बी सेंट अलोंग विद एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. जब भी अपन ने इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स किया, वहां पे भी लिखा था एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट चाहिए. सो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज फर्दर एक्सप्लेनिंग what we are going to discuss at the meeting, so that the members come well prepared कि अच्छा ठीक है ये चीज डिस्कस होने वाला है, and also as a member I will see अच्छा ये relevant है तो मुझे मीटिंग में जाना है, because I have to say something, I want to vote, I want my vote to count, something like that. But so you will have to give that details. Now if you are discussing normal things, what are the 4 normal things, the normal business that you have? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स के रिपोर्ट देना, डिविडेंड डिक्लेयर करना, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, एंड अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स. डायरेक्टर्स अपॉइंट करना, ऑडिटर्स अपॉइंट करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना. ये रूटीन काम है, ठीक है, करते रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. एनीथिंग अदर देन दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी योर special business. So anything which is not this is special. अगर special business है
तो मुझे देना पड़ेगा explanatory statement along with the notice saying that this is the special business and then give details about the special business. Everything has to be mentioned there. अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन करूँ जहाँ पे डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सनल का 2% से ज्यादा स्टेक है या कोई भी कंसर्न और इंटरेस्ट है, मतलब एनी स्टेक इन द कंपनी, देन दैट हैज टू बी मेंशन्ड. If the extent of such shareholding is not less than 2% shall also be set out in the statement. So मेरा जो भी stake है of director, manager की managerial person, तो I will set it out कि ये उसके भाई की company है. So then for the shareholders, they know okay, so here he has some interest, so he will want कि उसका भी फायदा हो और अपना भी मतलब transaction हो जाए. So that is why you have to disclose that. But otherwise explanatory statement is required if you're doing special business. What is special business? Special business is all that business which is not ordinary business. Ordinary business में क्या है? Financial statement, dividend, appointment and retiring of directors, appointment remuneration of auditors. These 4 things are ordinary business. इसके अलावा anything else is special business. Special business होगा तो notice के साथ explanatory statement जाएगा. Director, manager, key managerial personnel, whoever has any interest or in the transaction that is happening, then they will have to inform the shareholders about the same. Okay, any penalty, any contravention will lead to penal provisions. Are we good? Now, next coming to quorum. Quorum is कि नोटिस भेज दिया, लोग आ गए मीटिंग के लिए. सो नाउ आई हैव टू सी whether the quorum, minimum number of people who are required to be present at the meeting, whether they are present or not. 2 जन आ गए, मेंबर 10,000 जन की कंपनी है, 2 ही जन आए तो 2 जन बैठ के क्या मीटिंग करेंगे? नहीं. Companies Act is saying that every time a meeting is held, the minimum number of people have to be present, and that is what you call as a quorum. If you are a private company, 2 members have to be personally present. But if you are a public company, it changes. Less than 1,000 members, 1,000 to 5,000 members, and more than 5,000 members. 1,000 to 50 लिखा मैंने, 5, 15, 30. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी रिमेंबर. यहाँ पे 2 members पर्सनली प्रेजेंट. नाउ बॉडी कॉर्पोरेट जो होता है वो उसके बिहाफ पे भेज सकता है. जैसे अगर बेंचमार्क्स एकेडमी कंपनी है एंड और एक कंपनी है बेंचमार्क्स एकेडमी ब्ला ब्ला कंपनी, देन इन दैट केस आई एम अ डायरेक्टर इन बोथ द कंपनीज. सो आई एम अ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ द कंपनीज. सो इफ आई गो फॉर द मीटिंग, विल इट बी काउंटेड एज 1 person or 2 persons? What do you think will it be counted as? Very important case study पूछ सकता है इसके ऊपर. क्या बोलेगा तुम? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ. मैं दोनों कंपनी के बिहाफ पे जा रही हूँ, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ द कंपनीज. ट्राई तो करो. It will be counted as 1 member only. Why will it be counted as 1 member? Because it says the members have to be personally present. तो हर एक कंपनी का मुझे एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अलग चाहिए. अगर मैं दोनों के बिहाफ पे अकेली गई, खुद ही बैठ के कंपनी का मीटिंग कर दिया, तो इट इज नॉट ओके. आई नीड 2 members फॉर ईच कंपनी, अलग अलग मेंबर पर्सनली प्रेजेंट. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. एक शायद उसका एग्जाम्पल भी था कहीं पे, नहीं ये वाला पार्ट है, हाँ ये वाला पार्ट है, ये रीड करना इम्पोर्टेंट. ये तो ऑफ कोर्स चार्ट इम्पोर्टेंट है ही, बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अगर जिस दिन I have the meeting, I need to have that quorum. Less than 1,000, 5 members, 1,000 to 5,000, 15 members, more than 5,000, 30 members, private company, 2 members, ये होना चाहिए. But suppose I am going for the meeting, 11 बजे का मीटिंग है, मैं गई, तो प्राइवेट कंपनी है, मैं अकेली हूँ, सेकेंड मेंबर अभी तक आया ही नहीं है. I am waiting, and then after half an hour of waiting,
I will decide that okay, now the meeting will have to be adjourned. So the members have to be present within half an hour of the meeting starting. अपने को सबको पता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो लोग टाइम पे नहीं आते, इसके लिए हाफ एन आवर का वो लीवे दिया है. तो इन दैट हाफ एन आवर यू हैव टू बी देयर एंड यू हैव टू अटेंड द मीटिंग. If you are not there in the half an hour, then the meeting will be adjourned. तो 11 से 11:30 रुके तो 11:35 को भी आया तो मीटिंग adjourn हो जाएगा because the required quorum is not present within half an hour. adjourn कभी होगा? next week में हो जाएगा, same time, if possible same place को meeting adjourn होगा, and then in that meeting the quorum has to be present. But if this is a meeting which is called by the requisitionist, अभी अपन ने पढ़ा EGM requisitionist 1/10 of voting power और capital, तो अगर वो लोग ने मीटिंग बुलाया है and quorum is not present, then the meeting cannot be adjourned, it will stand cancelled. Again very 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 important point. तो जो requisitionist meeting है वो कभी adjourn नहीं होगा, उसके अलावा any meeting will be adjourned in the next week, and in that next week they have to be present at the meeting, the required quorum has to be there, and जब भी वहाँ पे resolution pass होगा तो the resolution will be effective from the date of the adjourned meeting and not the first meeting, because ये तो meeting हुआ ही नहीं था, adjourned meeting में resolution pass हुआ, तो ये वाला जो meeting है वो दिन से resolution will be effective. ठीक है, adjourned meeting के लिए 3 days का notice देने का जरूरी है. Yes, now I'll just fill up the bottle, give me 2 minutes, I'll just come back in 2 minutes and then we'll start with chairman. break ले लो, 5 मिनट का break ले लो, फिर वापस आते हैं. Yes, so coming to chairman of the meeting. Chairman of the meeting, like I said, is a person who will be appointed by the members. So the members will decide that okay, I want to, all of them will together with show of hands decide that okay, Mr. X will become the chairman. Is everyone okay? Everyone okay? Everyone will raise their hand and the chairman will be decided. Now chairman has been appointed. What is the role of the chairman? Why is he important? He is important because chairman जो है is a person who will ensure that the decorum of the meeting is maintained. तो अगर झगड़ा होता है between the members, then chairman is the person who will interfere and who will resolve the conflict basically. Then whatever the minutes of the meetings are to be maintained, so he will write them down. In today's generation, no one writes it down, or he has of course a secretary or someone who will write down on his behalf, and then he is responsible for ensuring minutes is maintained. If it has to be recorded, then again the chairman is the person who will ask for approval from the members that we are recording the meeting. I hope everyone's okay. If there's an issue, please let us know. No one says anything, the meeting will be recorded. So he is the person who is responsible for maintaining the minutes of the meeting. And if there is a tie when the votes happen, how many vote in favor, how many vote against, 10-10 जन दोनों side पे है, then in that case a chairman will have a casting vote. So he will vote and he will say vote in favor or against, and वो tie जो है वो break करेगा, तो tie breaker वो बनेगा, is basically again a chairman. ठीक है? So what all will he do? Manage the meetings, execute the minutes, decide all questions which arise at the meeting, and has a casting vote in the board meetings. ठीक है? Then chairman minutes भी maintain करता है, but ठीक है वो भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि वो इसके साथ ही होगा. जो अपना नहीं जाने दो, नहीं देखते. ठीक है, तो वो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग का ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नाउ कमिंग टू प्रॉक्सीज. प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्पशन है. प्रॉक्सीज म्हणजे इफ आई एम नॉट गोइंग फॉर द मीटिंग, आई विल अपॉइंट समवन टू गो ऑन माय बिहाफ. सो ही कैन गो ऑन बिहाफ ऑफ 50 members, not more than 50 members. So one proxy can act on behalf of 50 members, or if they are holding 10% or less of the voting rights. So 50, not exceeding 50 and 10% of the voting rights. So अगर मेरी अकेली का 12% है तो मैं एक ही जन एक प्रॉक्सी कर सकती हूँ, लेकिन मेरा फ्रेंड है उसके पास 5% है, मेरे पास 2% है, और एक फ्रेंड है उसके पास 1% है, तो वो प्रॉक्सी तीनों का भी प्रॉक्सी हो सकता है. सो लेस देन 50 members or 10%, whichever is applicable, accordingly he will become the proxy. प्रॉक्सी जो है
वो जाएगा उधर, नाश्ता करेगा, चाय कॉफी पिएगा, लेकिन he will attend the meeting but he will not be able to vote at the meeting. So he cannot speak at the meeting. So he cannot give his inputs, his ideas, or his opinions on what he thinks about the resolution that is being passed. Nothing doing. He just has to go. He can vote on behalf of the member, but nothing more that he can do than that. If I am appointing a proxy, I will have to intimate the company that I am appointing a proxy, and that proxy register will be available for inspection during the meeting or 3 days before the meeting. During the business hours or during the meeting. And the proxy that I am appointing can be appointed for up to 48 hours before the meeting. So up to 48 hours before the meeting, and proxies, inspection of proxy during the meeting and 24 hours before the meeting, not more, because 48 hours तक तो proxy appoint होता है, and 24 hours before you can inspect, or during the meeting you can inspect. If I am a company, if I am a shareholder, if there is a voting by electronic means, I have already voted at the meeting, then the proxy will again not vote at the meeting. He can go attend the meeting and give me inputs of what happened at the meeting, including all the mirch masala, but he cannot, again vote at the meeting. So member has to cast one vote. Either he himself can do it by electronic means, or the proxy can do it. Both of them can't do it, but because proxy is acting on my behalf. Correct? Proxy need not be a member of the company. Again, important. In section 8 companies, he has to be a member. ठीक है? So this is about proxy. Proxy में 48 hours before meeting वाला जो clause है, इसके ऊपर case study पूछा है. And ये वाले के ऊपर case study पूछा है. ठीक है. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स जिसके ऊपर केस स्टडीज पूछा है. वोटिंग अलग अलग वेज से होता है. शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पोल जो अपना केबीसी में होता है वो, एंड पोस्टल बैलेट. Voting by show of hands is very, very simple, and the most commonly used is when you are saying show of hands and you are having the meeting. But if you are a public company, you have more than 1000 members, then in that case show of hands will not work, because मेरे को गिनते गिनते आदमी थक जाएगा जब भी वो उसके पास पहुंचेगा तब तक. And hence I can have electronic means. Electronic means is something which is introduced by the Companies Act 2013. So electronic means, voting by electronic means that I will put it up on the website, and I will say, or I will share a link on the email saying that if you wish to vote for the meeting before the meeting is being held, then you can click here. When I click on the link, I'll have to put my name, phone number, email ID, whatever, and then it will take me to a page where it will say vote in favor, vote against. I have to click on any one and done. Once I have clicked on it, भूल से wrong भी click किया तो गया, वो vote हो गया है, and that is called as voting by electronic means. Now, how is the actual resolution happening or not happening decided? Then I will appoint a scrutinizer. Scrutinizer जो है वो आएगा for the meeting. मीटिंग में रहेगा, सब लोग मीटिंग में जो बाकी के लोग बचे हैं वो लोग वोट करेंगे जिन्होंने वोट नहीं किया है by show of hands, and they will vote. I will count how many members have voted at the meeting. Then I will take the data of whoever, scrutinizer will take the data of the members who have voted electronically. I will see who have voted favor, against. I will add up and sum everything, and then I will decide whether the resolution has been passed or the resolution has not been passed. So this is the duty of the scrutinizer. He will give all this information to the chairman, and the chairman will then announce it, and it will also be put up on the website saying this resolution passed, this resolution is not passed, and this resolutions which have been passed or not passed will also be filed. Not passed नहीं, जो resolution pass हुए, because वही resolution बनेंगे, will be filed with the ROC within a period of 30 days. Okay? इसमें cut off date होता है, which can be date not earlier than 7 days before the meeting. देख लेते हो, और कुछ अपना रह गया तो नोटिस ऑफ द मीटिंग जब भेजेंगे तभी बोलेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी वोट कर सकते हैं, एंड दोज डिटेल्स विल बी मेंशन्ड.
ग्रीवियंस ऑफिसर का भी एक नंबर देना पड़ेगा. Yes. Facility for remote e-voting shall remain open for not less than 3 days and shall close at 5 p.m. on the date preceding the date of the general meeting. स्क्रूटिनाइजर क्या करेगा? काउंट करेगा, रजिस्टर मेंटेन करेगा, सेफ कस्टडी और डिक्लेयर रिजल्ट्स ऑन द वेबसाइट. यस. वंस रेजोल्यूशन फेवर में हो गया तो इट विल बी डीम टू बी पास्ड एट द जनरल मीटिंग. सो अगर बेसिकली क्या होता है, जब भी वोट होता है तो वोटिंग सपोज आज हुआ ऑन 29th of Feb. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का 28th Feb शाम तक चालू था 5 PM तक एंड 3 days बिफोर. सो यहाँ पे भी वोटिंग हुआ. देन वोट्स काउंट किया एंड से सपोज 2nd या 3rd March को मैंने I have given that it is resolution passed, but I have given the details on 3rd March, but this resolution is actually passed and is effective from 29th of Feb and not 3rd March. So from date of general meeting important है, भले उसका result late आया, that is irrelevant. Now डिमांड फॉर पोल. अगर पोल करना है, जो अपन ने केबीसी वाला पोल किया, अगेन उसमें 2 टाइप के पोल होते हैं. एक वो केबीसी वाला पोल होता है जो इलेक्ट्रॉनिक होता है, एंड दूसरा पोल होता है जहाँ पे बॉक्स रखे रहते हैं एंड पीपल विल से फेवर अगेंस्ट. ऐसा वो लोग चिट्ठी अंदर ड्रॉप करेंगे. सबको चिट्ठी दिया रहेगा, दे विल हैव टू राइट डाउन ऑन द चिट्ठी एंड देन दे विल ड्रॉप द चिट्ठी. So that is also poll. अगर मुझे पोल से रेजोल्यूशन पास करवाना है, then I can also request for a poll. If I want to request for a poll, I need to have 1/10 of the share capital or 1/10 of the voting power, and then I will request for the poll. अभी मैंने अगर पोल रिक्वेस्ट किया है, again I will have a scrutinizer who will be appointed. That scrutinizer will get a dabba in presence of 2 people. He will seal the dabba saying that the dabba is empty and now I am sealing the dabba. Then that dabba will be got for the meeting. Then people will come, people will vote. Then the dabba will be taken by the scrutinizer. Then scrutinizer will count the votes in the dabba in presence of at least 2 witnesses, and those votes which are counted will then decide whether resolution passed, not passed. Whatever is the result, he will declare it to the chairman. Chairman will declare it. He will put it up on the website. Register will have to be maintained and details will be given. So all this responsibility is of the scrutinizer, who will directly report to the chairman, who will finally declare the result. Result भले late declare हुआ है. Resolution is effective from the date of the meeting, not from the date of the result. Same जो वहां पे पड़ा है, खाली यहाँ पे 1/10 of voting power और 5 lakhs विच एवर इज हायर. ये वाला एक रिक्वायरमेंट है जो अलग है. एंड दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ हाउ इट विल बी डन, विच यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है. सो अगेन दिस इज द प्रोसेस फॉर डिमांड फॉर पोल. पोल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स बहुत सिमिलर है, बिकॉज उसमें दोनों के बीच में स्क्रूटिनाइजर आता है, तो वो सेम ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस टाइप्स है, बट चांसेस कम है पूछेंगे. कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे? तो ये वाला क्वेश्चन, फेवरेट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट डाउन. Postal ballot. When there are important matters to be discussed, in that case postal ballot will come into force. Sections will specify that this has to be decided by way of postal ballot only. Postal ballot is basically nothing but where the members can also post by way of a
sending a post or a registered post, because if they are not going to be available at the meeting and they want to be at the meeting because these are important matters that are being discussed, तो इसके लिए वो लोग post से भी अपना वोट भेज सकते हैं, and those votes will also be taken into consideration. तो यहाँ पे what are the matters which are to be transacted by poll? Very, very important. Can be asked as a theory question, can be asked as a case study question, can be asked in MCQ also. Very important. Alteration of object clause of the memorandum, alteration of articles of association, change in place outside the local limits, change in objects for which money has been raised through public using prospectus and unutilized amount is there, shares with differential voting rights, then variation in rights for any class of shares or buyback of shares, election of director, and sale of whole or substantially the whole of the undertaking of the company. And one last is giving loans or extending guarantee or providing security in excess of the limits specified. अगर मुझे loan या guarantee देना in excess of the specified limits, then in that case. So most of these are from your chapters except for election and giving of guarantee. Other than that, everything is covered. So अगर मुझे ये करना है तो I will have to mention in my notice that postal ballot होने वाला है. It will be only for these things. It is not applicable to a private company. Only for a public company they have to follow this. And I will also give advertisement in the newspaper. 30 days के अंदर assent या dissent आना चाहिए, मतलब favor या against जो भी है. And the result, इसमें भी scrutinizer होगा, but उसका details देने की जरूरत नहीं है. On the website of the company it will have to be mentioned. ठीक है. So this is about postal ballot. So all different four, दो जो है show of hands very simple, दो जो है उसमें scrutinizer के बारे में लिख के आना है, and postal ballot में जो अपने 10 points है वो 10 points अपने को याद रख के उसमें लिख के आना है. ठीक है. Now circulation of members resolution, जो भी अपने resolutions pass होते हैं, that has to be made available to the members. It also has to be sent to the members. It also has to be sent to the ROC within 30 days from the date on which you are going to pass the resolution. अगर requisition है तो उसका अलग से requisitionist का signatures लेके then that resolution is to be filed. अगर एक्विजिशनिस्ट है तो कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द कंपनी बिकॉज दे आर होल्डिंग द मीटिंग. डिफॉल्ट है तो पनिशेबल है. प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स अगर किधर शेयर्स होल्ड करते हैं या कॉर्पोरेशंस मीटिंग ऑफ कंपनीज एंड क्रेडिटर्स, इन दिस केस दे विल अपॉइंट अ मेंबर हु विल एक्ट ऑन देयर बिहाफ. ही इज नॉट एक्टिंग एज अ प्रॉक्सी बट ही विल ऑलवेज बी देयर like a member because president governors they cannot attend such meetings. So this person will attend on their behalf. Now coming to resolutions. Resolutions अपन ने already अभी बीच में भी एक दिन discuss किया था. Resolution दो type के होते हैं, ordinary resolution, special resolution. Ordinary resolution जहाँ पे 50% or more people agree, then it's a ordinary resolution. Special resolution 75% or more people have to agree. Most of the scenarios where there's a ordinary resolution, then it will not be mentioned. It will just say resolution has to be passed. अगर कुछ नहीं mention किया तो ordinary resolution. जहाँ पे special resolution is required, they will specifically mention that a special resolution is required, and wherever it is mentioned that special resolution has to be obtained, and in the notice also, notice which you are sending, you have to say that this is a matter which requires special resolution. So the members know that this will pass only if 75% of the members are agreeing to this particular, and they are very competitive. Okay, trust me, I have been to meetings of private company जहाँ पे झगड़ा हो चुका है, and then they kind of chew your brains. That is why I decided I don't want to be at their meetings, where they actually chew your brains saying कि ऐसा ऐसा है, you vote in favor, you vote in favor, you vote in against. It is maddening. So especially when there is झगड़ा, so that notice has to specify ordinary or special resolution. ठीक है. 21 days notice चाहिए. Explanatory statement होना चाहिए. 75% resolution set out in notice. Notice must state that special resolution.
or otherwise the resolution is invalid. Please read the examples. These examples are added for May 24, I think, mostly. I'm not very sure, but I think these are added here for May 24. स्पेशल नोटिस अपन ने पढ़ लिया है, एडजर्न मीटिंग पढ़ लिया है, फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन अग्रीमेंट विद इन 30 डेज अपन ने पढ़ा है. यस, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज योर मेंटेनिंग ऑफ मिनट्स. मिनट्स जो है एज वी डिस्कस्ड is the responsibility of the chairman. So the chairman will take a note of everything that is being discussed. Why are minutes important? Because if we don't have minutes, then in the future if we want to know that what exactly was discussed at the meeting, we will never know about it. Also, people who have not attended the meeting, they will want to know what is discussed at the meeting. So if everyone gives their own version, then there will be no, because everyone will add apna mirch masala and then give the this thing. So there will be no consistency. So for people who have not attended the meeting, or people who are outsiders, creditors who don't come for the meeting, for them to know why this particular resolution is passed, the minutes are very, very important. So when the chairman is making the minutes, he will ensure that it is written as discussed without making any changes. There are 3 things that he can remove from the minutes, and which is very, very important because it's asked as a question. This part, please mark it as important. He will mention, he will remove things which can be considered as defamatory, irrelevant और immaterial. बच्चे की शादी हुई या बच्चा कौन से स्कूल में जाता है, irrelevant, detrimental to the interest of the company. कॉम्पिटिटर की बुराई मार रहे थे तो वो लिखना नहीं है, वो तो सब लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए that is something which is not to be mentioned. So defamatory, irrelevant things, and detrimental to the interest of the company. These 3 things he will exclude, and then he will mention the other things. It is solely at the discretion of the chairman, so he will accordingly make his report. Of course, it cannot be that he has missed out important information, because it's open for inspection. So this is open for inspection for the members. Agar members bola minutes book dekhna hai, तो it is available for their inspection. Outsiders want to see minutes book, they can see on payment of fees. So he cannot miss out on any important points, but these 3 things, defamatory, immaterial, detrimental to the interest, he can remove it, and then other things he will mention the fact as it is without adding any mirch masala. Any contravention punishable with fine. डिस्टिंक्ट मिनट बुक होगा तो नंबर लिखा रहेगा, कौन सी मिनट्स है रजिस्टर, शेयर होल्डर्स की है, डिबेंचर होल्डर्स की, अलग अलग जो है वो मेंशन करेगा. एंड it has to be updated within 30 days from the conclusion of the meeting. अगर पोस्टल बैलेट हुआ है तो you will have to mention postal ballot हुआ है. पेज नंबरिंग है, पेज नंबरिंग के हिसाब से होना चाहिए. There should be no pages missing out of there. And the minutes shall be permanently reserved and kept in the custody of the company secretary. It is very, very important. If I want to see what they did 15 years back and why they did it, then that minutes have to be there. So minutes is again something which cannot be destroyed after 8 years. Exemption to section 8 companies. Minute book has to be kept at the registered office, and if it is requested within 7 working days, it has to be made available for a fee not exceeding 10 rupees, and copy of general meeting shall be furnished within 7 days from the date of availability. अगर listed company है more than 1000 members, then data is maintained in electronic form, and that electronic form data is also available for inspection. एंड अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो तुम लोग उसका बैकअप करके रखोगे, इंश्योर करोगे एक्यूरेसी है, इट इज लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड इन फोल्डर्स विच इज अवेलेबल. सो ऑल ऑफ दैट इज देयर बट नॉट वेरी रेलेवेंट. And that gets us to the end of this particular chapter, management and administration. Very, 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 very important. Ideally, discuss it with your friends
कि चल आज मिनट्स डिस्कस करते हैं, चल आज चेयरमैन को डिस्कस करते हैं, चल आज नोटिस के बारे में डिस्कस करते हैं. डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स. द मोर यू डिस्कस इट द मोर इजिली यू आर गोइंग टू रिमेम्बर इट. खुद अकेले बैठ के पढ़ोगे तो नहीं इतना याद रहेगा, जितना तुम डिस्कस करोगे तो याद रहेगा. तो फोन कर रहे हैं तो बोलेंगे चल टाइम पास की बात करेंगे, बट उसके पहले लेट्स डिस्कस फॉरेन रजिस्टर और लेट्स डिस्कस इंडियन रजिस्टर्स, एंड देन यू नो annual return discuss karo. Discuss everything. The more you discuss it with them, the more chances are that you will remember it, because it's very procedural. A lot of things are to be remembered, but that is what is your companies act का जो day to day routine होता है वो procedurally होता है. So it is something that you should be aware of before you actually go into the market. So they are going to ask you questions about this particular chapter. So keep discussing it so that you remember it. Okay? Any questions, any doubts? Anything that's not understood? Now, coming to MTP RTP for exam questions. For exam questions क्या? For company law. Okay, starting here, I'll share this PDF on the group. The paid up share capital of